Hello everyone, welcome back to my channel Monica's Learning Hub. Again, this is the session 5 of part 1. हम लोग इसमें सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को मिक्स करके हम कैसे बनाएं. सो आई एम डूइंग एंड आई डू. Present continuous में we always use is, am, are and verb की first form plus ing. And in the present tense we use a subject and the helping verb is do or does. Okay. सो आपको इस टॉपिक में क्या करना है. हेयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, पार्ट 1, पार्ट ए एंड द पार्ट बी. ओके. सो इन द बी सेंटेंसेस आपको यूज करना है ऑलवेज प्लस आईएनजी फॉर्म. आईएनजी हम किसके साथ यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. सो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सेंटेंस, I have lost my phone again. So instead of saying again, we should say, or we can say like this, you're always losing your phone. Okay. The sentence B is, the car has broken down again. फिर से यहाँ पे again वर्ड का यूज हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग again in such sentences we can say like this, that car is useless, it is always breaking down. Okay. Next is, look, you've made the same mistake again. अभी फिर से यहाँ पे again का यूज हुआ है. But instead of saying again, we can say like this, I'm always making the same mistake. Okay. You have made the same mistake again. इससे बेटर है हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोलें, I'm always making the same mistake. नेक्स्ट सेंटेंस इज, ओह आई हैव फॉरगॉटन माय ग्लासेस अगेन. मैं फिर से अपने ग्लासेस भूल गया हूँ. ग्लासेस, ये यहाँ पे बात हो रही है स्पेक्टिकल्स की, चश्मे की. उसको भी हम इंग्लिश में ग्लासेस बोलते हैं. आई हैव फॉरगॉटन माय ग्लासेस अगेन. सो अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे, आई हैव फॉरगॉटन माय ग्लासेस अगेन, इट वुड लुक लाइक टिपिकल. So, for the advanced English, you can say you are always forgetting your glasses. Glasses means हम चश्मे की बात कर रहे हैं यहाँ पर. So, thank you so much. I hope आपको ये सीरीज पसंद आया होगा, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को मिक्स करके बनाया है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. थैंक यू. If you like it, please like, subscribe and share with your friends. See you again with the interesting topic soon. Thank you. Bye bye.